हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में, एक नई क्रंच वीडियो के साथ में। और आज मैं क्रंच करूँगी रोटी। इसको मैंने धुल लिया है और इसके बाद में क्योंकि मिट्टी लगी रहती है तो मुझे इतना सही नहीं लगता है क्रंच करने में, इसलिए मैंने इसको धुल लिया है। और यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट तो कोई नहीं करता है ना, सब्सक्राइब कोई करता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिए मेरे चैनल को और बताइए मैं क्या क्रंच करूँ। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ मैं और क्रंच स्टार्ट करते हैं, बाद में बकवास करती हूँ, ठीक है। बहुत ही हार्ड है ये।
सॉरी गाइस, मुझे कट करना पड़ा क्योंकि मेरे पड़ोस में लड़ाई हो रही है। जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी सबकी लड़ाई होती है, तभी सबको सब कुछ करना होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ में। खैर अभी तो बंद है लड़ाई, आपने भी सुना होगा थोड़ा सा क्लिप में। अभी तो थोड़ा बंद हुआ है, तो चलिए क्रंच करते हैं हम लोग क्योंकि ऐसे तो फिर हम लोग क्रंच कर ही नहीं पाएंगे। उसमें पानी डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये थोड़ा सा।
तो मैंने क्रंची कर लिया है। इसके बाद थोड़ा बहुत बाहर से बहुत शोर आता है तो इसको इग्नोर करें, क्योंकि अब क्या ही करें, जब इतना शोर आता है तो रात में भी अगर मैं बनाती हूँ तो रात में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा शोर आता है, क्योंकि फिर मुझे भी सोना रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा लेट रात तक नहीं जग सकती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा जो बाहर का साउंड है उसको इग्नोर कर देना और बताइएगा मेरा क्रंच कैसा लगा। अब बाद में ज़्यादा बक बक नहीं करूँगी मैं वैसे तो, लेकिन बताइएगा मेरा क्रंच कैसा लगा और नेक्स्ट क्रंच में क्या करूँ ये भी बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अपनी बक बक के साथ में और अच्छा से क्रंच लेके आऊँगी। ठीक है, बाय बाय।